Good morning, everybody. Today I Tapas Das Gupta welcome you all in Standard 4. Today I will take up the English reader book, Unit 3, Wit and Humor. Wit and Humor, full of fun and frolic and laughter. You see in the page 41 introduction, here are some pictures of little Nitin taken from the family album. Choose suitable words from the given box to indicate the expressions. We see first one, you can see here, this boy crying. What? Crying. Laughing. Angry. Sad. Worry. Okay. So these are the facial expressions. These are the facial expressions. Now I am going to start the chapter, the rich lady and the artist. The rich lady who is very rich, wealthy, and the artist. Once a rich old lady asked a well-known artist to paint her portrait. एक बार एक बहुत ही अमीर और बुजुर्ग महिला ने एक वेल नोन आर्टिस्ट, वेल नोन मीन्स फेमस, महान आर्टिस्ट को कहा कि मेरा एक तस्वीर बना दीजिए, पोर्ट्रेट बना दीजिए. द आर्टिस्ट वर्क हार्ड ऑन द पोर्ट्रेट फॉर मेनी डेज. उस कलाकार ने, उस आर्टिस्ट ने उनके पोर्ट्रेट बनाने में काफ़ी मेहनत की, काफ़ी दिनों तक. व्हेन द पोर्ट्रेट वॉज रेडी ही इन्वाइटेड द लेडी टू स्टूडियो. जब पोर्ट्रेट बनके तैयार हो गई तो उन्होंने उस लेडी को इन्वाइट किया अपने स्टूडियो में कि आइए अपना पेंटिंग देख लीजिए. तो ओल्ड लेडी केम टू द स्टूडियो. वो ओल्ड लेडी स्टूडियो में आई. सी हैड हर पेट डॉग विथ हर. उनके साथ उनके पालतू कुत्ता भी आया हुआ था. शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द डॉग. उनको उस कुत्ते से बहुत लगाव था. शी बिलीव दैट इट वॉज द क्लेवरेस्ट लिटिल एनिमल इन द होल वर्ल्ड. वो सोचती थी, उसको विश्वास था कि उनकी कुत्ता दुनिया का सबसे चालाक जानवर है, इंटेलिजेंट. द लेडी शोड हर पोर्ट्रेट टू द डॉग. लेडी ने कुत्ते को अपना पोर्ट्रेट दिखाई. लुक टॉमी डार्लिंग, देखो टॉमी डार्लिंग. टॉमी इज द नेम ऑफ द डॉग. सी सेड, हियर इज योर मिस्ट्रेस. सी, हियर इज योर मिस्ट्रेस. यहाँ पर तुम्हारी मालकिन है. बट द डॉग शोड नो इंटरेस्ट. ये कुत्ते ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई. द वेल्दी लेडी टर्न टू द आर्टिस्ट सेड. वो वेल्दी लेडी, वो धनी लेडी जो है, अमीर लेडी, वो आर्टिस्ट को मुड़ी कही, आई डोंट वांट दिस पोर्ट्रेट. मुझे तस्वीर नहीं चाहिए, मुझे पोर्ट्रेट नहीं चाहिए. इट डज नॉट लुक लाइक मी एट ऑल. ये मेरे जैसे लगता ही नहीं लगता कि मेरी तस्वीर है. इवन माई क्लेवर एनिमल कैन रिकॉग्नाइज मी इन द पोर्ट्रेट. यहाँ तक कि मेरे से सबसे चालाक, चपचे, बुद्धिमान, सबसे तेज जानवर जो है मेरे पालतू कुत्ता टॉमी, वो भी इसे नहीं पहचान पा रहा. द आर्टिस्ट वॉज अ मैन ऑफ वर्ल्डली विजडम. आर्टिस्ट जो था वो बहुत ही इज मैन ऑफ विजडम. कहने का मतलब उनका दिमाग बहुत तेज रहता था, बहुत ही बुद्धिमान थे. ही न्यू अबाउट द स्ट्रेंज वेज ऑफ वेल्दी पीपल. उनको मालूम था कि ये जो धनी लोग होते हैं, ये रिच लोग जो होते हैं, इनके जो है दिमाग काफ़ी स्ट्रेंज होता है, इनके बिहेवियर काफ़ी अजीबोगरीब होता है, इस संकी टाइप के होते हैं. हाँ, सो ही डिडंट आर्ग्यू. उन्होंने बहस नहीं की कि पोर्ट्रेट अच्छी है कि बुरी है. उन्होंने कोई बहस नहीं की. ही डिडंट आर्ग्यू. ही सिंपली सेड, मैडम. उन्होंने सिंपली कहा, मैडम प्लीज़ कम अगेन टुमारो. मैडम काइंडली आप कल आइए. आई विल मेक द पोर्ट्रेट लुक सो रियल दैट योर टॉमी विल वैग इट टेल एंड लिक इट. मैं आपकी तस्वीर को ऐसे बना दूंगा, आपके पोर्ट्रेट को ऐसे बना दूंगा तो दिखने में ऐसा हो, इतना रियल महसूस होगा, रियल लगेगा कि आपका कुत्ता भी जो है पूछ हिलाएगा, वैग स्टेल पूछ हिलाएगा और फोटो को चाट लेगा. ठीक है, लिखिए. द नेक्स्ट डे लेडी विजिट द स्टूडियो अगेन. अगला दिन फिर लेडी स्टूडियो आई. दिस टाइम द डॉग वैग द टेल. इस बार कुत्ता जो है पूछ हिलाने लगा टॉमी. एंड रैन टू द पोर्ट्रेट. और दौड़ के पोर्ट्रेट के पास आया. इट लिव इट विद ग्रेट इंटरेस्ट. और पोर्ट्रेट को चाटने लगा ग्रेट इंटरेस्ट के साथ और चाव के साथ. लेडी से हाउ वंडरफुल. लेडी का हाउ वंडरफुल, वाओ, हाउ ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत है. माई टॉमी लाइक द पोर्ट्रेट एंड सो डू आई. चूँकि मेरी टॉमी, मेरे कुत्ता, पालतू कुत्ता, कोई पोर्ट्रेट पसंद है, इसलिए मेरे को भी पोर्ट्रेट बहुत पसंद है. प्लीज़ रैप इट अप, प्लीज़ कवर इट अप, प्लीज़ फोल्ड इट अप.
The artist asked for a big price and she paid it willingly. आर्टिस्ट ने बहुत बड़ा मांग की कि मेरे पोर्ट्रेट का प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। जो भी उन्होंने मांग किया, बड़ा हैंडसम डिमांड किया, तुरंत लेडी ने बगैर कुछ सोचे हुए अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से उनको पेमेंट कर दिया। द आर्टिस्ट हैड ए हार्टी लाफ व्हेन शी लेफ्ट। जब वो लेडी अपना पोर्ट्रेट लेके चली गई कुत्ते के साथ, तो आर्टिस्ट जो जोर से ठहाका लगा के हंसा। ही रब द पोर्ट्रेट विद जूसी पीस ऑफ मीट। उन्होंने क्या किया था, पोर्ट्रेट में जो है मीट का जूसी पीस से उसको रगड़ दिया था। इट स्मेल हैड मेड द डॉग लिक द पोर्ट्रेट। मीट का जो स्मेल जो था, मीट का जो स्मेल था, उसी के चलते जो कुत्ता जो है पोर्ट्रेट को चाट लिया। सो रियली इन दिस वे वी सी दैट द आर्टिस्ट befooled, 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 befooled the rich lady. Okay. On the basis of a reading of the story completed for A2, the rich lady asked the artist to paint her portrait. Got it? The lady refused to take the portrait as her pet dog Tommy could not recognize her in the portrait and showed no interest. See? The lady refused to take the portrait as her pet dog Tommy could not recognize her in the portrait and showed no interest. The artist did not argue with the lady because he knew about the strange ways of wealthy people. The artist did not argue with the lady because he knew about the strange ways of wealthy people. Because he knew about the strange ways of the wealthy people. The artist made Tommy lick the portrait by rubbing the portrait with juicy piece of meat. The artist made Tommy lick the portrait by rubbing the portrait with a juicy piece of meat. Now come to page 55, A3. Answer the following question. Why did the artist laugh after the lady had left the studio? The artist laughed after the lady had left the studio because he had befooled the lady. He had befooled her. Because he had befooled her, बेवकूफ बनाना, by rubbing her portrait with a juicy piece of meat. Number 2. The lady admires her dog for its cleverness. Do you think the dog was really clever? I think actually the dog was not clever. It was the juicy piece of meat that had attracted the dog. It was the juicy piece of meat that had attracted the dog. The lady was foolish. Justify the statement with evidence. Evidence means proof from the story. When her dog licked her portrait with great interest, she thought, who is she? The lady, the rich old lady, that it loved her so much. But actually, it licked the juicy piece of meat being rubbed on her portrait. Once again, I am repeating this answer. Listen to me carefully. When her dog licked her portrait with great interest, she thought that it loved her so much. But actually, it licked the juicy piece of meat being rubbed in the portrait. How was the artist rewarded for his cleverness? The artist was rewarded with a big prize. Being given by the rich lady. The artist was rewarded with a big prize being given by the rich lady who was befooled by him. Now tick the correct answer. The old lady was very fond of her dog because she thought it was very good looking, it was a good companion, it was the cleverest animal in the world. The old lady was very fond of her dog because she thought it was the cleverest animal of the world. Option C. Number 2. The lady refused to take the portrait the first time because she looked ugly in it. Her dog showed no interest in it. The artist was rude to her. The lady refused to take the portrait the first time because her dog showed no interest in it. The artist did not argue with the lady. because she did not know how to talk.
He was scared of the lady. He was a worldly wise man. Because he was a worldly wise man. Got it? You see A5. Complete the table using words from the box. Work in pairs. See who can do it first. See, these are given here. Little, bad, clever, best, cleverer, worst, worse, nearer, nearest, better, nearer, cleverest, less, fat, fatter, fattest, least, good. First, positive degree, clever. Second, competitive degree, cleverer. Third is cleverest. That is superlative degree. Clever, positive degree, cleverer, competitive degree. Third one is cleverest. That is superlative degree. Little, less, least. Little, less, see, little, less, least. Now, near, near, nearer, nearest. Fat, see, fat, fatter, fattest. Good, better, best. Good is positive degree, better is competitive degree, best is the superlative degree. Got it? Follow it? समझ रहे हैं आप? Bad, worse, worst. Bad, worse and worst. Now see A6. Complete the following sentences with words from the boxes. One is done for you as an example. First one is done for you. An artist uses a brush to paint pictures. An artist uses a brush to paint pictures. A dash uses dash to dash his boat. A boatman uses oars to row his boat. A boatman uses oars to row his boat. A teacher uses a piece of chalk to write on the blackboard. A teacher uses a piece of chalk to write on the blackboard. A doctor uses a thermometer to take your temperature. A doctor uses a thermometer to take your temperature. Got it? A doctor uses a thermometer. A doctor uses a thermometer to take your temperature. आपको बुखार नापने के लिए थर्मोमीटर की सहायता से वो आपको नापता है आपकी बुखार के लिए. Okay? Now see A7. The following words have been taken from the story. Their opposite given them called opposite means antonyms. Got it? Find them out. Write the appropriate space. One is done for you. Laugh, cry. Opposite of laugh is cry. Old, young. Old, young. Y-O-U-N-G, young. Beautiful, ugly. U-G-L-Y, ugly. Wealthy, dhani. Poor, P-O-O-R, poor. Clever, foolish. F-O-O-L-I-S-H, foolish. A. Complete a table with words from a story to make meaningful phrases. One has been done for you as an example. Describing words. What are called describing words? Describing words are called adjective. Describing words are called adjectives. Naming words, noun. Naming words, noun. Phrases. First one has been done for you. Old lady. Old, describing words old, naming words lady, phrases, and old lady. You join these two words and write an old lady. Describing words clever, naming words artist, phrases, a clever artist. Describing words wealthy, naming words lady, phrases, a wealthy lady. Describing words big, naming words tree. What will be the phrases? A big tree, Last one, juicy, J-U-I-C-Y, juicy. Describing words, adjective. Naming words, piece of meat. What is the phrases? A juicy piece of meat. Now, A9, see,
here you have to fill up it this studio artist portrait strange. See, value based question. See, this is a very important question from the examination point of view. This is a very important question from the examination point of view. Is value based question. Is cleverness a positive virtue or a negative quality? Discuss citing reason. It is a positive virtue. It helps a person to face or solve any problem. It is a positive virtue. Cleverness is a positive virtue. It helps a person to face or solve any problem. It helps a person to face or solve any problem. Okay, so we can say that cleverness is a positive virtue. Undoubtedly, it's absolutely true fact that cleverness is a positive virtue. A positive virtue. Virtue is good quality. Got it? And what is the opposite of virtue? Wise. V-I-C, wise. Got it? Now see, A12. Imagine that the rich lady of the story is your aunt. She has written to you how she decided to purchase a portrait. Would you appreciate her purchase? Would you appreciate her that she done the right thing? Would you justify? Write a letter to your aunt expressing your feelings in absolute priority. 40C Vikas Nagar, Mumbai, 4th October 2019. My dear aunt, I got your letter. I am happy, not happy. You just struck the word happy. I am not happy with your decision by your portrait. In fact, I am really very surprised to know that you have purchased. In fact, I am really very surprised to know that you have purchased your own portrait as per your dog's choice. Really, it is very strange that you purchased your portrait as per your dog's choice. Something very strange. I believe your dog is very clever. Even then, you should have used your own presence of mind. Dogs have no reasoning mind. Okay? You should have used your own brain. You should have used your own mind. I hope in near future you will be very careful about taking decision. I hope in the near future you will be very careful about taking decision. Lovingly, that will be okay. Now, this one you do as the homework B2. See, these are the words. This you do it yourself. Now come to page number 51. Work in pairs. Find a word that rhymes the following. Hue. Hue means what are the rhyming words? Hue. Clue. C-L-U-E. Clue. / glue. G-L-U-E. Glue. Second one is way. May. M-A-Y. May or say. S-A-Y. Say. Third one is roar. R-O-A. Roar. You can write S-O-A-R. So. / B-O-A-R. Bo. Now grain. B-R-A-I-N. Brain. Or you can write train. T-R-A-I-N. Train. This one. Is it visible? Okay. Now you see B4. Jumble words are given. First one has been done for you. B4. 1. K-C-O-R. Jumble word. K-C-O-R. It will be rock. It will be rock. Now you see second one. W-R-N-A-I-O-B. When you just arrange this word, it will be rainbow in the Dhanush. Now third one. T-B-O-A. It is boat. It is boat. Now number 4. O-W-N-T. It will be town. T-O-W-N. Town. Now we see what is a rock. Number 3. In the third column. Rock. A very large stone. Rock is a very large stone. Rainbow. Forms in the sky after rainfall. Forms in the sky after rainfall. Boat. A small vessel for traveling in water. Boat.
a small vessel for traveling in water. Town, a small city. Town is small city. This one you can do it just to see the pictures. Elephant, trumpet, horse, knee, lion, roar, goat, bleat. Goat, bleat. Now basics, you see that when you look at the pictures, see the pictures you do. The man has no face. The man has no face. The dog has tail and horn. The tree is topsy-turvy. The tree is topsy-turvy. The sun has square shape. The frog has wings. The frog has wings. See, laughter is the best medicine. Today we are living in the world full of stress and tension. So previously we used to say, and apple in a day keeps your doctor away. Now I can say that laughter is the best medicine. So laughter, you can reduce your tension. You can alleviate your tension. Father, why did you sleep in the examination hall? Father, very angry. He's saying, why did you sleep in the examination hall? Just simply answer me. Why did you sleep in the examination hall? Daddy, you yourself once told me, आपने तो खुद कहा था, if a question is difficult to answer, don't waste time. अगर क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो, उसका आंसर करने में बहुत दिक्कत आ रही है, आप समय बर्बाद मत कीजिए. Do something else so I will to sleep. तो आप लोग कोई दूसरे काम करो, so I will to sleep. It's really a humor. Okay. Witty reply, you can say. It is a witty reply. WITTY. Witty reply. C1. Do you know some kings or the ministers who were famous for their wisdom, cleverness? Discuss with Patara. First one is King Krishna Dev. King Krishna Dev. King Krishna Dev, Tenali Ram, Birbal, Akbar. King Krishna Dev, Tenali Ram, Birbal and Akbar. Birbal was a jester मतलब चोकर, मस्खरा हंसाने वाला. Birbal was a jester in the court of Akbar, Emperor Akbar, while Tenali Ram was a jester in the court of King Krishna Dev. Now we will do the foolish man. Foolish मतलब बेवकूफ, डफर. The foolish man, scene 1. It is Emperor Akbar's court. Akbar बादशाह का दरबार है. Akbar smiling. Birbal, do you think you can find me the 5 most foolish men in Agra? Akbar smiling and saying to Birbal, do you think you can find me the 5 most foolish men in Agra? क्या तुम सोच सकते हो? क्या तुम मेरे लिए 5 बेवकूफ आदमी को ढूंढ सकते हो आगरा शहर के? बीरबल विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब. बीरबल रिलैक्सिंग मोड, बड़े आराम से. आई विल ट्राई माई लॉर्ड. मेरे मालिक, मेरे सरदार, बादशाह सलामत, जरूर कोशिश की. सीन 2. बीरबल इज वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ आगरा. बीरबल आगरा की गलियों से, रोडों से गुजर रहे थे. लुकिंग अराउंड केयरफुली, इधर उधर वो ध्यानपूर्वक देख रहे थे. ही सीज ए मैन लाइंग ऑन हिज बैक इन पडल ऑफ वाटर. उसने देखा एक आदमी पीठ के बल पर पानी का पूल जमा हुआ है, पानी है, उसी के ऊपर बैठा हुआ है. हिज आर्म स्ट्रेच वाइड अबव हिज हेड. हिज आर्म स्ट्रेच वाइड अबव हिज सी. आई यू सी दिस बीरबल एट द बैक लाइन. Birbal, what are you trying to do? Now Birbal asked the question to the man who was lying down in the puddle of water. What are you trying to do? क्या करने की कोशिश कर रहे हो? Man, I am trying to stand up. I am trying to get up. खड़ा होने की कोशिश कर रहा हूँ. I slipped and fell into this puddle while I was on my way to buy some clothes for my wife. मैं इस रास्ते से गुजर रहा था अपने वाइफ के लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए. अचानक मैं पैर
मेरी पैर स्लिप करके फिसल गई और मैं गिर गया। वाई डोंट यू बीरबल, वाई डोंट यू यूज योर हैंड्स देन? आप अपने हाथों को इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? मैन, बट आई कांट डू दैट, मैं ये कर नहीं सकता हूँ। इफ आई चेंज द पोजिशन ऑफ माई हैंड्स, अगर मैं अपने हाथों का पोजिशन को चेंज कर देता हूँ, आई लूज द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ क्लोथ माई वाइफ वॉन्ट्स, तो मेरी वाइफ जितना मीटर कपड़ा या जितना लेंथ के कपड़ा बताए हैं उसे मैं भूल जाऊँगा, इसलिए मैं से 10 के 10। बीरबल होल्ड द फेलो बाय द हेयर एंड सेट्स हिम ऑन हिज फीट। बीरबल ने उस आदमी को बाल पकड़ खींच कर उठा के खड़ा कर दिया। द मैन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हिज आर्म स्टिल अबव हिज हेड, उनका हाथ अभी भी सर के ऊपर था इस तरह। यू हैव रियली हेल्प मी, आपने वाकई में मेरी मदद की। बीरबल, प्लीज कम विथ मी, आप मेरे साथ चलो प्लीज। एज द मूव अलॉन्ग, दोनों साथ से चलते हैं। बीरबल नेक्स्ट सीज अ मैन राइडिंग ए हॉर्स। बीरबल क्या देखते हैं, एक आदमी घोड़े पर सवार है, कैरिंग ए बंडल ऑफ स्ट्रॉ ऑन हिज हेड, और बिचाली का एक बंडल जो है गठरी उनके माथे के ऊपर रखा हुआ, देखिए देख रहे हैं। बीरबल, व्हाई डू यू कैरी दैट स्ट्रॉ ऑन योर हेड? ये बिचाली का बंडल, हाँ बिचाली का गठरी अपने माथा पर क्यों रखे हैं? कांट यू कीप इट ऑन द हॉर्स बैक बिहाइंड यू? क्या आप इस घोड़े पर सवार हो, घोड़े के पीछे, पीठ के पीछे रख नहीं सकते अपने पीछे? सेकेंड मैन, बट आई कांट डू दैट सर, सर मैं कर नहीं सकता हूँ, क्या करें? दिस हॉर्स इज़ वेरी ओल्ड एंड वेरी वीक, ये घोड़ा बहुत बूढ़ा है और बहुत कमज़ोर है। इट माई डाई विद एक्स्ट्रा वेट, जब उससे ज़्यादा भार पर लाद देंगे तो ये मर भी सकता है। ऑलरेडी इट हैज़ टू कैरी मी, ऑलरेडी ये मेरा वजन हो रहा है। बीरबल, यू आर जस्ट द पर्सन आई एम लुकिंग फॉर, आप वही आदमी हो जिसमें ढूंढ रहा हूँ, जिसकी मुझे तलाश है, प्लीज़ फॉलो मी, आप प्लीज़ साथ। Birbal wanders with two footmen following him. The first one with his arms still above his head, the second was still riding his horse with a bundle of straw on his head. उसी कंडीशन में दोनों आदमी को लेकर बिल्कुल ढूंढ रहा है, तीसरा आदमी तलाश कर रहा है, तीसरा बेवकूफ़ भी। Suddenly he sees a man bent in half looking for something on the street light. अचानक वो ये सीन देखते हैं, Is it visible? Okay. तो क्या देखता है, एक आदमी जो है आधा झुका हुआ है और स्ट्रीट लाइट के ढूंढ रहा है। बीरबल, व्हाट आर यू सर्चिंग फॉर? बीरबल ने उसे पूछा, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हो? थर्ड मैन, आई हैव लॉस्ट माई डायमंड रिंग समवेयर आउट देयर इन डार्कनेस। वही दूर अंधेरा में मैंने अपना हीरे की अंगूठी खो दी है। पॉइंटिंग टू डार्क स्पॉट फार अवे फ्रॉम वेयर स्टैंडिंग, जहाँ पर खड़ा है वहाँ से काफ़ी दूर। सिंस आई कुड नॉट सी ओवर देयर, आई एम लुकिंग फॉर द रिंग हियर इन द लाइट। चूँकि वहाँ अंधेरा है, मैं वहाँ देख नहीं पा रहा कुछ, इसलिए मैं रोशनी में ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर। Very funny, isn't it? Very strange. Birbal, please come with me. I'll help you to find your ring. आप मेरे साथ चलो, मैं आपकी रिंग ढूंढने में मदद करूँगा। सेम थिंग, अकबर्स कोर्ट, अकबर की दरबार है, बादशाह अकबर। बिरबल टू अकबर, सर आई ब्रॉट यू द 3 मोस्ट पुलिसमैन इन द सिटी ऑफ आगरा। आई जज देम टू बी पुलिस फॉर द एक्शन। मैं आपकी खिदमत में आपके सामने 3 बेवकूफ़ आदमी को आगरा शहर के ढूंढ के लाया हूँ, और मैंने उन्हें बेवकूफ़, मैं इन तीनों को बेवकूफ़ इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने इनका एक्शन देखा, कि एक्शन से ही मुझे जस्टिफाई कर दी कि दे आर वेरी फुलिश, बेवकूफ़। अकबर, रियली वेरी गुड, वाकई, बट आई आस्क्ड यू टू ब्रिंग 5 मोस्ट पुलिसमैन, नॉट 3 अगस्त में। लेकिन मैंने तुमसे कहा था 5 बेवकूफ़ आदमी लाने के लिए, 3 नहीं। आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू ब्रिंग 5 पुलिसमैन, 3 अगस्त में। Birbal, sir, the last 2 most policemen in Agra are you and I. Birbal क्या बोलते हैं, सर, the last 2 most policemen in Agra are you and I. और जो बाकी जो पुलिसमैन जिसके बारे में आप बोल रहे हैं वो है आप हो, मैं। You because you set me such a foolish task. आप इसलिए क्योंकि आपने मुझे इस बेवकूफ़ भरी काम करने के लिए कहा, foolish task, you given me this foolish assignment. I because I foolishly carried out your orders. और मैं दूसरा बेवकूफ़ हूँ चूँकि मैंने बिगर सोचे समझे आपने जो कहा उसमें हाँ में हाँ मिला। दैट मेक्स 5 डजंट इट, इससे 5 बन गया है ना। अकबर लाफिंग, अकबर बस्ट टू लाफ, में 2 से ठहाका हंस पड़ा। इट डज, इट सर्टेनली डज, जी हाँ इट डज सर्टेनली लाफ। सो वैसे ठीक है,
आप देखे होंगे अकबर बीरबल के कहानी जरूर पढ़े होंगे. तो you know that Birbal was very famous for his witty remarks, for his witty answers. Whenever Akbar used to ask him many questions, Birbal used to give his answer most witty. On the basis C3, on the basis of the reading of the story, complete the following. Number 1. Once Emperor Akbar asked Birbal to find him the 5 most foolish men in Agra. Once Emperor Akbar asked Birbal to find him the 5 most foolish men in Agra. 2. Birbal agreed to do so and went out in search of 5 most foolish men in Agra. 5 most foolish men in Agra. When Birbal asked the first man why he was not using his hand, the man answered that he would lose the measurement of the length of his wife. That he would lose the measurement of the length of the clothes his wife wanted. Okay. On the way he met another man who was carrying a bundle of straw on his head while riding a horse. On the way he met another man who was carrying a bundle of straw. On his head while riding a horse. 5. Question 5. He asked him why he was carrying straw on his head. The second man answered that his horse was very old. His horse was very old and very weak. Full stop. It might die with the extra weight. The third foolish man was searching his diamond ring under street light. According to Birbal, the last two most foolish men were Emperor Akbar and Birbal himself. Birbal called Akbar himself foolish because Akbar set him to such a foolish task and Birbal foolishly carried out his order. Birbal called Akbar and himself foolish because Akbar set him to do such a foolish task and Birbal foolishly carried out his order. Now, C4, match column A with column B. Puddle, a small pool of water, especially rainwater. Puddle, a small pool of water, especially rainwater. Number 2, bundle, a collection of things tied together. Spot, a particular place or area. Certainly, without doubt. Certainly means without doubt. Measurement, length and height etc. are found by measuring. Now C5. Read the extract and answer the questions below. Birbal, what are you searching for? Third man, I've lost my diamond ring somewhere out there in the darkness, pointing to dark spot far away from where standing. Since I could not see over there, I'm looking for the ring here in the light. What is the third man looking for? The third man is looking for his diamond ring. Where has he lost the ring? He has lost the ring somewhere out there in darkness. How do we know that he's foolish? We know that he's foolish through his foolish activities. He has lost his ring somewhere out there in darkness and is searching for the light. He is far away. Really, he is foolish. Foolish means duffer. D-U-F-F, duffer. Bekoof. See this word, you see C6, a pinch of humor and dash of it makes life sweet as sugar. Do you agree? How does wit and humor make life easy? Today we are living a very busy life. We are full of tension. Okay, we are full of stress. So it is wit and humor which makes our life sweet. It makes our life tension free. So it has become a very much a part and parcel of daily life. So, my dear students, it is my earnest request to you that what you do, whatever we have done in the class, you do it in your homework copy
Okay, do it in homocopy and get verified one. Okay, thank you. Have a nice day. Okay.